हालांकि उन्होंने सूट नहीं पहना है. हेलो सर. ज्यादा फिट मत होना, ऐसा गिर जाएंगे हम लोग. इधर And keep tweeting those photographs of your son. We love them. No, I've been told not to tweet them anymore, यार. No, I think they're fantastic. वो साला मुझसे ज़्यादा फेमस होता जा रहा है. All right, ladies and gentlemen, I open it out to the entire press here. We can start with as soon as I see a hand up. Just say your name and the question you want to Yes, ask the please. actor or the director or खान technician. साहब मेरा नाम आलोक है, मैं OFM आज तक से. मुझे मालूम ही नहीं पड़ता तेरा नाम आलोक है, अगर तूने बताया नहीं होता आलोक. सर डी से डॉन भी हुए, डी से देवदास भी हुए, अभी डी से दिलवाले भी आ चुकी है. आपके हिसाब से, आपको लोग दिलवाला कहते हैं, आपके हिसाब से कौन होता है दिलवाला आपके हिसाब से? हमारी फिल्म का भी वही मीनिंग है एक्चुअली. यू नो, वंस हु कैन फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, एंड होल्ड नहीं करते, एरोगेंस नहीं रखते, ईगो नहीं. तो गलत हो गया यार, मैं तो सब कुछ हूँ ये. बट people who have large hearts are the people who can forgive, forget, and move on and love each other. I think that's as simple as that. I saw a hand. Yeah. Hi, Shahrukh. The trailer looks great. I mean, absolutely fantastic. Just introduce yourself. Yeah, I'm Arjun. I'm from International Business Times UK. My question is, how many references to Dilwale Dulhania Le Jayenge are there in this film? यही है रेफरेंस जो है. इससे बड़ा रेफरेंस और क्या हो सकता है? Because Chennai Express, your last collaboration with Mr. Rohit Shetty, उसमें भी there was a sequence where you were, you know, bringing those goons on board the train, and आपने कहा कि ये मैं पहले कर चुका हूँ, and you know, similar kind of scenes or dialogues in this film as well for the fans who would want to kind of see. Actually, you know, it's very first. Kajol, me feel very honored. Director of Rohit's caliber, one of his favorite films is Dilwale. And to say it again, that one of the favoriteest directors that Aditya Chopra has, who's made Dilwale, is Rohit Shetty. So it's a strange kind of a mutual admiration without them actually meeting each other or talking about each other. तो वो दोनों इतनी, मैं जब भी अलग-अलग वक्त पे दोनों को मिलता हूँ, तो एक दूसरे की इतनी तारीफ करते हैं, just for the work each has done. I think that respectability and respect for work. So somewhere down the line, I think just for the fun element, we had it in Chennai. और इसमें तो हम ही हैं यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कौन सा रेफरेंस हो सकता है? And then we took it seriously in Dilwale. Yeah. All right, thank you. हाय शाहरुख सर. सर सुवैज्ञा सर, मैं दिल्ली से हूँ सर. हाय सुवैज्ञा. सर थैंक यू सो मच सर. मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. मगर बताएगा ज़रूर ना फिर भी. सर बस एक बार आपको हक करना चाहता था. अच्छा, वो हम दूसरे थिएटर में कर लेंगे. दूसरे थिएटर में हक हो जाएगा. सर मेरी पूरी किस्मत लड़के याद करते हैं मेरे को सिर्फ. सर आई एम आल्सो ट्राइंग इन film industry, so just give me a Wow, an open audition call. Sir, just give me a clue because Sweet. Okay, so we move on to the keep next. doing what you're doing, yeah. God bless. Okay, moving ahead. Yeah, on the in the front there, the lady in the front. Hello. I'm going to try and send the mic across to you. Yeah, it's behind you. The mic is behind you. Hello. Behind you. आपके पीछे. हाँ. Okay. Hello, sir. Your trailer was amazing. I just loved it. My question is, I'm Veena from NDTV. My question is to Varun and Kriti. There is a legendary couple in your film. तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं आपका पैर overshadow ना हो जाए या फिर sort of something like that? Varun will answer this first. No, not at all actually, you know, because first of all, I mean, from what you gathered, I'm playing his younger brother in the film. And I think when you play someone's brother, these things like insecurity, jealousy and all, it can't come to your mind. I have an older brother in my real life as well. So I try to get into the skin of my character, so I don't feel any of this. I do love him a lot, I do love her a lot, and do love her a lot as well. So this film is not only just like one commercial film coming, it's an emotional film. So everything that we all do together, we all stand by each other. And I just hope, like a younger brother, I can support him till the end in this film. And obviously Rohit sir is there to look after what happens with the track, and he'll do the best in that. And I too, like Chucha, feel that I'm good in the film as well. So I think in this film, Rohit sir has kind of made sure that everyone has a separate track and everyone is, you know, in their own space and they stand out.
But also, as you see, there are two love stories going on. And शाहरुख काजोल से कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते. तो हम सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे या कुछ. I hope that we were able to create half the magic that they both do, and we'll be happy with that. बट हम लोग ने हमारी लव स्टोरी में एक बहुत यूनिक चीज है, आप खड़ी हो जाओ, दुनिया को दिखा देते हैं आज मैंने हमारा. आज फ्लैट्स क्यों पहने ये दिखाते हैं हम. आओ. मैंने हील्स पहने हैं, इन्होंने फ्लैट्स पहने हैं, और ये काफी लंबी लड़की. नो, आई एम ट्राइंग टू कट माय हाइट सो पीपल फील. तो एक्चुअली हम लोग ये हाइट पे होते थे. यू स्टैंड स्ट्रेट, डोंट वरी. एंड आई थिंक फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर हु लव टॉलर गर्ल्स देन देम, इट इज पॉसिबल. प्लीज गो आउट देयर एंड ट्राई. And we've actually used this. Rohit sir has used this fact, my height factor, in the film also, which is in good humor. But ये actually इसको लगता है कि बहुत छोटा है, इतना छोटा नहीं है ये. नहीं हूं मैं, I'm ऐसे ही telling बोलता you. हूं. I We enjoyed know that. you. I was fine with everyone standing on a Shut up, path now. even you did it, okay? Don't lie. Hi, Shahrukh, in the center. Anita here from BNS. Shahrukh, with every film you raise the bar, and recently Varun said that this film will make Indians proud at the global level. What do you have to say on that? Actually, as a part of Red Chillies, I mean, I'll just talk about Red Chillies and Rohit Shetty Productions. Raising of the bar is by the creative team. Rohit's team, actually, you know, who's always behind the scene, and Red Chillies team, who are helping to take the vision a little further than what we have. And inshallah, I don't know, film jab aayegi, humne koshish bahut ki hai कि it has elements of what an international quality film should look like, with a family feel, the heart of Indians. It's actually a family happy comic film coming on the right time. But beyond that, everything else in terms of the technology and the technique of the film, sound, everything should be international. I think that credit goes to Rohit. So हमने कोशिश की है, और inshallah it'll all step up from the last film. Thank you. हाय काजोल, अनुप्रिया, प्रभात खबर न्यूज़पेपर से. आपकी और शाहरुख की जब भी जोड़ी आती है काफ़ी चर्चाएं होती है, और जो गाना है रोमांटिक गाना की हमेशा चर्चा रहती है. तो आपकी क्या मेमोरीज जोड़ी है, और आपके लिए ये जोड़ी क्या मायने रखती है? Memories, I hate anecdotes, honestly. तो बताने के चक्कर में जाऊं तो I think it's boring for me to hear. So I'll just let's talk about what we did in this film. इस picture के बारे में बता दूं. We shot in Iceland for the song, and it's actually we shot the song in 7 days. We start to finish, we finished the song in 7 days. Or we have worked like dogs in cold weather, nearly died, turned blue. वो जो blue दिलवाले का था वो हमारा actually skin का रंग हो गया था by the end of the shot. But we had a great time, and गाना बहुत अच्छा था. Or we loved the song so much also. So I think जब आप देखोगे screen पे, I think you have seen snippets of it in the trailer. But I think it's just looking so magical and so amazing that I think the magic that you keep talking about as a pairing also comes from that fact, honestly. हेलो काजोल मैम, मेरा भी आपसे सवाल है. मेरा नाम रवि कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. सॉरी, मेरे को कुछ दिखता नहीं है 4 फीट के बाद में. श्योर. मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आप इतने दिनों बाद आप बड़े स्क्रीन पर वापस आ रही हैं, और आप अपने फैमिली कमिटमेंट्स के ज़रिए के चलते आप फिल्मों से दूर रहीं. तो अभी आप वापस शाहरुख सर के साथ आप आ रही हैं फिल्म में. तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म करने के दौरान आप अजय वाज babysitting. या फैमिली कमिटमेंट्स होती है, राइट? तो इसके चलते आपको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होती है ना, काफी मैनेज करना पड़ता है टाइम. आई थिंक टाइम मैनेज करना पड़ता है, उनसे तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. आई डोंट कंसिडर दैट द राइट कॉन्टेक्स्ट रियली, लेकिन आई थिंक एवरी वुमन हु वर्क्स who has kids always feels that guilt. आपको हमेशा ये फीलिंग लगती है कि you know, oh God, I'm not spending enough time with my kids, और मेरे बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे, मैं इतने दिन छोड़ के गई हूँ उनको. तो ये हमेशा एक गिल्टी फीलिंग होती है हर माँ में, एंड इट्स समथिंग दैट वी हैव टू बैटल डेली. हर रोज. इस वक्त भी मेरे बच्चे घर पे हैं, एंड आई स्टिल फील दैट नो, यू नो, आई शुड बी देयर. मुझे होना चाहिए वहाँ पे. I need to give them their dinner, lunch, whatever. And so that's something that you have to face, you have to confront every day. And I have had a
great time working with for the film. जैसे मैंने कहा, Ajay has very sweetly and nicely supported me. So all the days, जितने दिन मैं बुल्गारिया में थी और जितने दिन मैं आइसलैंड में थी और he was very sweet and he stayed at home and took care of my kids. So I'm very happy and I'm very lucky that I have a husband like him.